इस फिल्म में जो आपका रोल है, इट इज़ वेरी टाइगर श्रॉफ वाला एक्शन. या टाइगर श्रॉफ. सो कितना प्रेशर हुआ टाइगर उसके श्रॉफ वजह से? का एब्स एंड पेक्स एंड ऑल दिस थिंग्स. नो. अनुराग कश्यप के साथ में यू आर देयर, ही इज ऑन स्क्रीन दिस टाइम, नॉट एज अ डायरेक्टर, एज एन As an actor, co-actor. या. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? I really enjoyed it. कार्तिक आर्यन से क्या प्यार है आपको, क्या इश्क है? आशिकी 3 करनी है उनके साथ. नहीं कर सकते हैं, इट्स अ गुड आइडिया. आई थिंक इट विल बी ग्रेट. मेरी और कार्तिक की जोड़ी बहुत सुपर हिट जोड़ी रहेगी. व्हाट इज एग्जैक्टली लव फॉर यू? बेइंतहा मोहब्बत किया है मैंने एक से ज़्यादा लोगों से, और अभी भी करता हूँ. इफ़ यू गोइंग सम प्लेस, इफ देयर इज नो क्राउड, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग ना. इवेंट्स पे होता है यूजुअली. आप किसी इवेंट पे जाते हैं तो क्राउड्स आर मोबिलाइज्ड. यू आर मेड श्योर दैट देयर इज लाइक 500-600 पीपल देयर. अच्छा, सो दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट. ओपन सीक्रेट तो नहीं है, मैं भांडा फोड़ रहा हूँ ना. जिनको ऐसे गाली देते हैं ना, नेपो किड्स, उनको अपने आप को साबित करना पड़ता है. बट देयर एडवांटेज इज दिस, दे Right. ऑलरेडी नो हाउ थिंग्स वर्क. आर यू द सेम पर्सन जो घर पे होता है वही बाहर और जाने के ट्विटर बाद पे में? वही है सेम. अभी जैसे मैं तुमको मिल रहा हूँ ना, तो आई वांट टू बी द सेम पर्सन ऑन माय सोशल मीडिया. नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. आज के हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इनके साथ में हमने एक रेंज ऑफ टॉपिक्स पे बात की है. हिज नेम इज गुलशन देवैया. गुलशन भाई को आपने कई सारे अमेजिंग रोल्स प्ले करते हुए देखे होंगे इंडियन सिनेमा में या OTT प्लेटफॉर्म्स पे. गुलशन के साथ हमने कई सारे अमेजिंग टॉपिक्स पे बात की एंड ही वॉज ओपन अबाउट एवरीथिंग. गुलशन स्पीक्स अबाउट हिज लव लाइफ, ही स्पीक्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विथ हिज एक्स वाइफ. हमने ये भी बात की कि गुलशन की रिलेशनशिप कैसे है विथ मिस्टर विवेक अग्निहोत्री एंड मिस्टर अनुराग कश्यप जी. गुलशन इज एन एक्सट्रीमली विटी, फनी एंड चार्मिंग ह्यूमन बीइंग. इस एपिसोड को आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे. सो लेट्स बिगिन इन 3, 2, 1. Awesome. हमने ऑलरेडी बात तो कर ली है बात तो पूरी. मतलब वो कितनी सारी. हाँ, एक मैंने पॉडकास्ट तो उसमें हो गया. हाँ, एक पॉडकास्ट तो ऑलरेडी खत्म हो गया. वो तो प्राइवेट था आपके लिए, वो तो ऐसे ही फ्री हाँ, में personal tips थी मेरे सैंपल लिए. था वो, सैंपल. Yeah. ये बाकी लोगों के लिए. बट देन ये पॉडकास्ट हो रहा है बिकॉज बैड कॉप इज कमिंग आउट एंड Really? ऐसे ही मुझे मिलने की कोई मंशा नहीं थी आपकी? नहीं अरे थी, क्या of course बात थी. है. So- मुझे लगा मैं बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हूँ, लेकिन यहाँ जो है. यू नो आई फील आई नो यू सिंस मेनी एजेस, क्योंकि मैंने आपके जितने इंटरव्यूज अवेलेबल थे मैंने सब चाट लिए. तो आई फील लाइक कि मैं आपको बहुत जनरेशन से जानता हूँ. Yeah, तो इसलिए लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग लाइक आई जस्ट फेल्ट कि एक फ्रेंड से ही बात कर रहा हूँ मैं. एंड यू गिव वेरी लाइक अ फ्रेंडली वाइब, चिल वाइब. सो Yeah, I mean, I like to talk to people. So इंटरेस्टिंग बातें करने का मौका मिल जाता है तो आई डोंट माइंड इट एट ऑल. एंड आई थिंक देयर आर सम मतलब गुड इंटरव्यूज लेटली. आई थिंक पिछले 2-3 साल में ऐसे मौके मिले हैं मुझे. सो दे हैव पीपल हैव रियली एंजॉयड इट. एंड लाइक वैसे कि पॉडकास्ट इज अ फॉर्मेट की एनीथिंग अंडर से क्या बात करनी है आज. सो देन यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग ना. एंड आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी एनी एक्सपर्ट इन एनी पर्टिकुलर फील्ड अपार्ट फ्रॉम से perhaps the film industry and the entertainment business to some extent and the craft of acting. उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, मैं कह सकता हूँ. बाकी सब में जस्ट लाइक जानकारियाँ हैं, बट आई कांट रियली. राइट. नहीं तो फिर वो कमेंट्स में ट्रोल होता है ना, ये कौन होता है ऐसे बताने वाला कि प्रोटीन पाउडर हजम नहीं होता. राइट. बट देन यू नो जब मैं फर्स्ट टाइम जब मेरे जो मैनेजर सुरेंद्र, उससे आपकी बात हुई थी एंड ही टोल्ड मी कि कंफर्म हो गया सब कुछ. कौन? मेरा मैनेजर. अच्छा. हाँ, या जो आज यहाँ पे नहीं है. नहीं, राइट. ही हैड मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. यस. सो एक्चुअली लाइक ही टोल्ड मी कि कंफर्म हो गया सब कुछ. देन आई वाज लाइक कि मेरा भाई है हु फॉलोज यू लाइक रिलीजियसली, तो आपका ट्विटर सबसे ज़्यादा फॉलो करता है. एंड ही वाज लाइक कि तू ये सब चीज़ें पूछना, ये पूछे बिना मत आना. पूछ लो भाई. वाइल वी आर इन द कन्वर्सेशन में पूछूंगा क्योंकि कई सारी चीज़ें आपके ट्विटर को लेके एंड यू ओपनली से कि आई एम ट्रोल. तो आई मीन आई वाज लाइक आजकल तो अभी तो बहुत ठंडा हो गया था. बट देन हाउ डिड लाइक ट्विटर पे ये ऐसा जो एक फ्रीडम लिया आपने कि कॉल आउट करेंगे किसी को, जो मन में है वो बोलना है, हाउ डिड दैट हैपन? नहीं, जो मन में है बोलना नहीं है. मैं काफ़ी डरपोक किस्म का अभी आदमी हूँ. लेकिन विद सम मैटर्स आई फील दैट कि व्हेन यू थिंक दैट पर्टिकुलरली आई फील दैट हाँ थोड़ा यहाँ पे प्रिटेंशियस हो रहे हैं या इनसिंसियर हो रहे हैं, तो आई फील लाइक कि मैं कोशिश करूँगा कि बबल बर्स्ट करूँ. राइट. नहीं हो रहा है.
वो बट जिनको मतलब जिन लोगों को किसी का समर्थन करना है वो तो करेंगे ही, मेरी बात सुन के अपना मन नहीं बदलेंगे, बट एटलीस्ट मैंने ट्राई किया. Yeah. आई फील अ लिटिल ऑनेस्ट अबाउट कि हाँ एटलीस्ट आई ट्राइड, बट आई एम सो एंड आई एम अ बिट मोर रिलैक्स्ड नाउ विथ थिंग्स. Yeah. एंड वो एक्टर होने का एक एडवांटेज ये भी है कि यू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आर रिटन ऑन द स्क्रिप्ट. Hmm. So you develop some kind of empathy also towards things, and you start to see things like that कि हाँ ठीक है, Right. सब कुछ white and black नहीं होता है. ज़्यादातर लोग ऐसे बीच के ही होते हैं, ग्रे शेड्स में होते हैं हम लोग. कुछ लोग डार्क होते हैं, कुछ लोग थोड़ा लाइट होते हैं. And then you see, and then when somebody claims something to be white and black, and then you are like, then I may have something to say about it. Hmm. Sometimes I don't, but वो कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी के अगेंस्ट हम लोग खिलाफ हो रहे हैं. मैं खिलाफ तो किसी का भी नहीं हूँ मैं. I don't, but sometimes I do that, and people enjoyed some of the nonsense, silly trolling that I did. But उससे भी then I started, then it was expected of me कि हाँ फिर वो then that becomes my calling card ना कि ट्विटर पे तो गुलशन बहुत मज़ेदार है ऐसे, and you know press also picked up on it, and they were writing some mentions in articles and all those things like that. So then I'm like, no. This is my purpose of existence is not to be entertaining on Twitter. It is a medium of communication. But मेरा पूरा existence can't be on how I tweet. Yeah. है ना? But- that can't be. Yeah. That's not who I am. It's part of me. And I absolutely love social media. It's just that I think most of us don't know how to use it constructively and responsibly. मुझे लगता है कि मैं इसको एक सीमित तरीके से यूज़ करूँगा. मैं ऐसे यूज़ करूँगा, मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करूँगा. Yeah. कभी कभी थोड़ा हंसी मजाक भी करूँगा, और कभी कभी थोड़ा हल्का फुल्का सा बबल बस्टिंग टाइप का ट्रोलिंग भी करूँगा, जो मतलब लोगों को मज़ा आया है, लेकिन वैसे कोई चेंज नहीं लाता. वो हाईली अनसक्सेसफुल इन एक्चुअली बस्टिंग एनी बबल. Yeah. But are you opinionated? I do have opinions, yeah. And many times I'm wrong also about my opinions. And you're always growing, na? So, but that's the thing with social media. There is no scope of changing your mind. You say, if I say something and you think that I'm talking nonsense, and tomorrow if I change my opinion, it's very likely that on Twitter, हम लोग आमने सामने बात कर रहे हैं, it's okay because it's also afflicted by how my face is, what my expression is, my tone of voice and all those things. तो words में कोई tone पकड़ नहीं सकता ना. Right. So if you're pissed off in the morning and somebody has written something like that, and you will interpret it on by how you're feeling that way, or going by their image or something like that. So you may interpret me saying that नहीं, how can you change your mind now? तू तो वो बोलता था, अब सडनली आपने ट्यून बदल दी. Yeah. ऐसे करके ट्रोलिंग भी होती है. So there is people don't give scope for people to actually change their mind. So I try not to be that person. Okay. लेकिन क्या है, मैंने भी ऐसा थोड़ा अब मैं गलतियों से तो सीखते हैं ना. इसके ऊपर मुझे वापस आना, बिकॉज समवन जिसके साथ में आप पंगे लेते रहते हो या पास्ट में लिया है, विवेक जी ना, विवेक. हाँ, दे हैव बीन अ गेस्ट ऑन आवर शो, तो आई विल टॉक अबाउट Yeah, sure. या थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ये. व्हाट इज एग्जैक्टली लव फॉर यू? It's a nice. I can't describe it in one word. Yeah. It's different for different things. Like I recently lost one of my cats, my elder one, Ira. Oh, I'm so sorry. Yeah. I knew I loved her, but when she was gone, I saw her take her last breath in front of me. And she had cancer, and she wasn't responding to chemotherapy, and we had to let her go because it was in her eyes. Okay. When we were trying to force feed her every time, so she was like, let me go. हो गया था उसका. Nearly 13 years she was with us. There is a sense of loss, but at the same time that sense of loss also transforms into memories of her, and it makes me realize how much I really loved her. I did not realize until she wasn't there. So a sense of comfort, it's that thought when I think of her, na, of course that pain is there, but it's also transitioning into like, it puts a smile on my face. So there is a sense of comfort, just the thought, the thinking of that person, that being, or it could be a thing also. If it makes you comfortable, then that is love. If it brings a certain comfort in you, then that is love. Love is also wanting to
take care of them, look after them. Like, do you need anything? Can I do something for you? Can I be useful? Or you having a tough day? Like, do you need a massage or anything? Like, okay, you sit down. Anything, you want to look after them. कोई ऐसे चीज़ों को हम लोग देखभाल करते हैं ना, like things that we buy, we really passionate. Some men are really passionate about cars. They go out of their way to like look after those cars and keep shining. That's love. ये लोगों के लिए भी होता है ये भी लव है. लव अनफॉर्चुनेटली इतना अनकंडीशनल नहीं है जितना हम उसको करना चाहते हैं. इट जस्ट बिकम कंडीशनल, बट इट्स ओके. बट इफ इट्स पॉसिबल टू हैव अनकंडीशनल लव विद समथिंग, देन यू शुड. एंड आई थिंक आई हैड दैट ओनली विद माई कैट. I can't really define love, but it's a warm, fuzzy feeling that makes me feel very good, despite what situation I'm in. I may be in distress, in pain, but when I think of that person who I love, if it gives me comfort, then that's what love is. It's that warm, fuzzy feeling. Beautiful. But then I don't know, man. I'm not a poet. Some poets describe it very beautifully. So Rumi. I don't have the मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ. मुझे रूमी नाम मालूम है, लेकिन आप आपने वो किताब पढ़ी है, द 40 रूल्स ऑफ लव? यू शुड. भाई तो ये तो दूसरी वाली तीसरी किताब है जो आप रेकमेंड कर रहे हो. नहीं, दिस इज सो आई विल टेल यू, द 40 रूल्स ऑफ लव इज द ओनली बुक विच आई हैव एवर लव्ड. मतलब ट्रू लव मुझे उस एक किताब से ही हुआ है. मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, बट वो एक किताब है जो पता नहीं, मतलब उससे ट्रू लव हुआ है मुझे. एंड उसमें इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रूमी इन फैक्ट, एंड इट्स अ फिक्शन बुक. So you should read it. मतलब मैं सबको recommend करता हूँ. Every guest that comes on the show, I recommend this one book to them. So you should check it out. I think a lot of people don't know how to express love, because I think they करके बताते हैं, वो बोल नहीं सकते उसके बारे में ज़्यादातर लोग. Or we look for that, like we remember a line that Rumi wrote or somebody else wrote. It's not our own. कि that this really defines what love. But are you sure that's what it is, or are you, because this line is impressive, you're thinking that your love is, you're fitting your love into that? I don't know which one it is, but then वो एक या तो महसूस कर सकते हैं या वो लव को, प्यार को जता सकते हैं. आई थिंक वो लव को क्लियरली डिस्क्राइब कर पाना, आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन अगेन इंटरप्रिटेशन अबाउट व्हाट लव इज टू देम. बट देन ओनली लाइक रोमांटिकली स्पीकिंग, डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं ना कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है. डू यू थिंक कि 2-3 बार भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है. आई डोंट थिंक सो. हुआ है, मुझे भी हुआ है. मैंने बेइंतहा मोहब्बत किया है मैंने एक से ज़्यादा लोगों से, और अभी भी करता हूँ. बट आई नो दैट इट्स नॉट इन अ वे दैट आई वांट टू गेट बैक टू देम. बट देन you feel like that about somebody, and they've moved on and they're probably in some other place, and you don't have that relationship, but the feeling is there. Everything, all the good things that was good transactions that happened between two people will always remain. If you're able to, if you're able to get over the pain, and that's most important. You have to give enough time to get over the pain and the trauma of a bad relationship, of something that didn't work. Once you're able to do that, you have to remember all the good things, and you'll be surprised that there are a lot of good things which हम भूल जाते हैं उस पर फोकस करना. तो मैं कर सकता था, तो मैंने किया. सो आई रिमेंबर्ड ऑल दोज थिंग्स, एंड नाउ वी आर बैक टुगेदर. बट दिल टूटा है कभी? बहुत बार टूटा है. मतलब पूरा ऐसा एकदम प्रॉपर वो रॉकस्टार वाला वैसा? Shattered into bits, like for days and days. Most recently that only, the death of Ira. Ira's death was shattering. Like, I'm still mourning her death. It's the worst sort of pain that I've ever felt. How do you deal with that? You let it happen. You know why it's happening. There is a sense of loss. You acknowledge it and you let it happen. But I am also determined to not let it ruin my life. I'm not going to like stew in it forever and ever and ever. कि अभी ये नहीं है तो. So I want to, like, because you love something and there is a sense of loss and you have to grieve properly. Yeah. So I accept that process of grieving. I'm not going to hide from it. But at the same time, I'm not going to let it ruin my life. Do you think pain is important for actors or any artist for that matter? For growth, yeah. But किस तरह से? Can you explain? आपको अगर शरीर बना है तो जिम जाके लोहा उठाना पड़ेगा. अब लोहा नहीं उठाएंगे तो आपके मसल्स में माइक्रो टायर्स नहीं होंगे, फिर वो रिपेयर होके मसल्स बड़े नहीं होंगे. वैसे ही फॉर एवरीथिंग, कैरेक्टर,
or values, your intelligence, your soch, vichar, your political perspective, anything, your views and all, everything is challenged, and Yeah. sometimes it will hurt, and it should hurt. Then only then you will grow. Nahi to we'll all be sitting comfortably in our bubbles, na, like how it happens in Yeah. social media. Everybody is in their own bubble, and then जब बबल में बहुत सारे लोग हैं तो आपको लगा कि यही दुनिया है. True. इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है. Which is very weird. Yeah. So you have to. But being challenging is वही है ना. We are not civil about it. That's the problem with social media कि हम किसी के व्यू पॉइंट को चैलेंज करते हैं तो उसे गाली गलौज करके या उनको नीचा दिखा के उनको ना उनका खिल्ली उड़ाते हैं. ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. Okay. This is my common problem with say the political scenario that currently we have. एक दूसरे का मजाक बहुत उड़ाया जाता है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा. उनके ईगोस हर्ट होंगे तो जब मौका मिलेगा ना वो डंडा मारेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे. बट देन वो तो मतलब आई थिंक उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स सोशल मीडिया जिस तरह से वर्क करता है उसकी भी है कि वो आपको एक जोन में पुट इन कर देता है कि मतलब वहाँ से आप बाहर ही नहीं आ पाते. आई नो, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट कि ठीक है मैं जो बता रहा हूँ मे बी दिस विल लाइक यू नो मेक सेंस टू समबडी और लाइक यू नो प्लीज चैलेंज माय व्यूज आल्सो लाइक बट बी सिविल अबाउट इट. बट देन देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई मेरा मजाक उड़ा सकते हो, खिल्ली मत उड़ाओ. मजाक कर सकते हो. सेंस ऑफ ह्यूमर इज डिफरेंट फ्रॉम डिमीनिंग समबडी ना, कि उनका मजाक उड़ाना. अभी you can have a sense of you can crack a joke about a person who has some weight issues, but if you make fun of that person's weight issues, then that's being personal and that's attacking that person. So that's what I'm trying to explain, like sense of humor to bilkul hona chahiye. That will ease that will completely ease and relax people, but don't मतलब खिल्ली मत उड़ाओ लोगों का. So challenge करो बिना खिल्ली उड़ाए, but वो नहीं होता. People over my close friends also do the same यार. Okay. तो खिल्ली उड़ाते हैं, मतलब मौका ही नहीं छोड़ते बिकॉज उनको पता है कि उनका भी खिल्ली उड़ाया जाएगा. एंड देन सम पीपल हैव थिक स्किन, दे डोंट रियली केयर बिकॉज दैट इज कन्वर्टेड इनटू अटेंशन. बट देन इस पॉडकास्ट के लिए देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई रियली वांटेड टू आस्क यू, एंड दिस इज समथिंग जो कि आई एक्चुअली हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस थिंग विथ माई गर्लफ्रेंड. And your experience basically and your relationship with your ex-wife. Yeah. So आपने divorce लिया था, and you have been very open about this, which is why I'm bringing this personal thing here. And then you again were dating her, and you are dating her right now. We're dating. Exactly. Can you explain me, because I had a conversation about this with my girlfriend, and we were like, you were in what part of it don't you understand? As like, in we divorced and how we got back together. Yeah. And why? More than what? Like why? We had like we couldn't. We weren't successful at being a happy couple. So we had to separate. After we separated, we took time to heal because there are wounds on both sides. And once you heal, you focus on all the good things that you had, and there were quite a few. And मैं अपनी बात करता हूँ, उसकी बात वो खुद करेगी. I adored her, and that adoration and that warm fuzzy feeling I had for her had not died. It was still there despite all the hurt and the wounds and the pain and all that. It was still there, and I suppose it was there for her also. So then we focused on ये मिसाल मैं बहुत बार दे चुका हूँ लेकिन वो अच्छा है, मैंने खुद बनाया है. तो पेड़ को बचाने के लिए हमने एक टहनी काट के फेंक दिया. काटना ही पड़ा, पेड़ बच गया. वो पेड़ शायद फल नहीं देगा लेकिन छाँव देगा पेड़. देगा या देगी? देगा. हिंदी भाषी नहीं हो ना तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है. कोई लॉजिक, क्या लॉजिक है यार इसका? तो फल नहीं देगा तो एटलीस्ट छाँव देगा. सो ये सोच थी हमारी. सो देन once we had taken enough time to sort of heal, I tried to date other people. Even those women used to tell me कि you're still in love with your ex-wife. So I went back to her, and after a considerable time, I was going to the UK to film for Ulaj, जो आ रही है अगले महीने. So I told her like we have managed to save our friendship. Relationship तो गया. We've managed to save all that is good between us. We still care for each other. We look after each other. And so, do you think we should start dating again? So she said, yeah, it's a good idea.
एंड सम अदर पीपल ऑल्सो हैड सजेस्टेड. Hmm. तो इसीलिए मैं भी इस पे जोर, मतलब हिम्मत तभी आई जब आई had gone on a date and this woman said that you should date your ex-wife. I'm like, it's so sweet of you to say, because मैं आया हूँ तुम्हारे साथ डेट पे, लेकिन तुम कह रही हो कि नहीं नहीं ये सब भूल जाओ, ठीक है, we'll have a nice meal together and a conversation, but you should really consider getting back with your ex-wife. So, and I really considered it and I proposed it to her, and then she said, yeah, let's. So she came to the UK, and then we started dating from there, and that's where we are at. Are you both happy now? As of now, yes, that's where we are. So I don't want to fall into any conclusions. I just want to be in the moment. Yeah. And it's definitely better than before. We're also more mature, and we've learned from our mistakes also. Yeah. And when we make the same mistakes also, we are mindful that, oh, we're making the same mistake. And we seek professional help. We have a wonderful therapist in Delhi who does video conferencing sessions with us. Okay. That also helps a lot. Okay. Interesting. But then Bad Cop. So Anurag Kashyap के साथ में you are there. He is on screen this time, not as a director, as an actor. As an actor, co-actor. Yeah. So how was that experience? I really enjoyed it. मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनुराग के साथ मैं ना स्क्रीन स्पेस शेयर करूँगा. I thought I'll probably get to do more films with him as a director or as a producer. He's produced one of my films also. It's a kids film that I'm part of called Little Thomas. So Hridansh is a cute little boy who's the protagonist, who's playing Thomas, and as me and Rasika Duggal, a wonderful actor. So we are playing the Mirandas. So it's a family of. अब उसके बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं? हाँ. But I never thought that I'll act with Anurag. Yeah. But he's a pretty good actor. क्राफ्ट की समझ है उनको. थिएटर करते थे, क्राफ्ट को उन्होंने समझा है. So he is a capable actor, except that he doesn't want to be an actor. As in, he has no genuine interest in having a career as an actor also. Yeah. It's something that he doesn't mind doing on the side once in a while. अब वो once in a while काफ़ी ज़्यादा हो गया अभी, repeatedly हो गया अभी. Because in the South, he likes a lot of directors. Yeah. So when they invite him, he finds it difficult to say no. And जैसे हमारे प्रोड्यूसर है इसमें लीना टंडन, who's good friends with him. So he found it very difficult to say no. And then it's also fun to play villains ना, क्योंकि मस्ती कर सकते हो आप and do all those things. And he says that he has this obsession about dying in different ways. So कुछ तो है ऐसे self-deprecating humor है उनका थोड़ा. So he wants to see himself being blown to bits and things like that. So but it was fun also because I got to hang out with him. कि इतने सालों में कभी उनके साथ ऐसे hang out नहीं मारा. So what do you do जब उनके साथ में hang out करते हो? तो इधर उधर की बातें करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, ऐसी ही बातें. So do you talk about like films? नॉन फिल्मी बातें भी करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे थे. तो कुछ तो है, something like catches our fancy, and then we start talking. Or he's also a sneaker collector. He usually has those horrendous hideous वो designer brands के होते हैं. Okay. मेरे तो वो वाले टाइप के नहीं है. I'm a regular sneaker head. तो उसके बारे में होते हैं, या थोड़ी सी हंसी मजाक हो गई, तो it usually start from like talking about the scene or something like that. तो it could be anything. But on a very lighter note, like उनके साथ में जब डायरेक्टर जैसे आपने काम किया, तो as a director he is giving you his inputs and everything. Yeah. But now he is acting in the show. No inputs. So कुछ भी नहीं. उल्टा मैं देता था उनको inputs because we were so doing कभी action. ऐसा अंदर फील होता ना कि उस टाइम पे तो बहुत बोल रहे थे, अब एक्टिंग करनी पड़ रही है, तब बोलते ना. As a director also he doesn't really give too many directions. Okay. So he says that 50% of the job is getting the casting right. But in my experience, क्योंकि मेरा पहला opportunity उन्होंने दिया था, That Girl in Yellow Boots has my introduction title, Introducing Gulshan Dev, उस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है. हालांकि वो तीसरी रिलीज हुई थी, बट फर्स्ट क्रेडिट है वो. He gave me the script and he's like, it's yours now. Okay. So you see what you want to do with it types. So he gives you a lot of trust for free. Because somewhere he trusts you. He doesn't necessarily say it. उन्होंने कभी बोला नहीं कि I trust you with this role or something like that. But he makes you comfortable and trusted. And he makes everybody who works with him ना feel that way. चाहे भले वो छोटा काम कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट है, डी हैं, कोई काफ़ी जूनियर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं फिल्म सेट पे. If he feels that he's hired you, then he will give you that trust. Right. Then it's up to you as to what you do with it. So I relished that opportunity.
And I made the most of it when he gave me that thing कि हाँ I am getting a wonderful opportunity. और बहुत सारे लोग उसमें तो मेरे दोस्त ही थे, तो दोस्तों के साथ काम कर रहा हूँ, वो भी एक कंफर्ट लेवल है. करेक्ट. ठीक है, इनको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी दोस्त के शौहर हैं. उनकी शादी नहीं हुई थी तब जब फिल्म शूट कर रहे थे, तो दे वर एंगेज्ड. सो ये तो सब घर के ही लोग हैं. On top of that, somebody who's as with the reputation of Anurag Kashyap is not really giving you any directions. He's not telling you what to do. He's trusting me with where I will go with this role. I relished it. And you enjoy that kind of freedom, right? No, not necessarily. Okay. Not necessarily, but I was lucky that कि शुरुआत में मुझे ऐसा कुछ opportunity मिल गया जहाँ पे इतना trust मिला मुझे. Okay. But some directors are particular. They are particular. They have a particular. Every director has a particular sensibility, right? So you have to understand the sensibility and try your best to serve that sensibility. Right. Yeah. So Aditya Dutt is the director of Bad Cop. He has a very different sensibility. He doesn't see things the way Anurag sees. So I have to understand his sensibilities. And if Aditya comes and tells me that it's a close-up shot, try not blinking so much, because then that is his aesthetic. Correct. Yeah. Like Anurag Kashyap may not have any problems with me blinking. Because that is his aesthetic. But for Aditya Dutt's aesthetic, my blinking is throwing that aesthetic off. Right. So I have to understand his aesthetic, accept it, and serve that aesthetic. But then, because जो मैंने ट्रेलर देखा, it's a sort of like a double role for you. It is a double role, not sort of. It is a proper double role. So कितना challenging होता है double role? Because I have always had this in my mind कि जब double role करना होता है, and whereas places या films जिसमें आपको single role है वो basically, तो कितना difference होता है दोनों में? The acting per se is not very difficult because I take my pre-production very seriously. So the preparation is always there, and many times the preparation is not like कि research किया ऐसे कमरे में बंद हो गया something like, but it's also understanding the sensibility of the director, the aesthetics, the scenes, the character. It's an illusion. Na? I'm not Karan or Arjun. I'm playing Karan and Arjun. So who are these Karan and Arjun? So I constructed in my imagination. Of course, the script will give me a direction. It will push me in a direction ki this is who they are. And then it's open to my interpretation and my creativity and my skill set and inputs from the direction team and impulsive inputs what I receive from my other actors, my co-actors. वो कुछ देंगे तो उसको लेके मैं respond करेगा. Okay. So I have to be open to that also. So this is how things happen. If I don't prepare well, then anything is difficult. I can't just show up and say unprepared and say that to some extent my experience might pull through because 13 साल के ऊपर हो गया अभी काम करते करते. डेब्यू 11 में हुआ था, अभी 24 चल रहा है. So 13th year. So but still I will feel not very underconfident if I don't prepare. But the challenges of doing double role is purely technical. Because sometimes you're acting with yourself. Correct. You can't look in the mirror and do it because you can see your own reflection because that's another person altogether. So you have to create that in imagination. So पहले मैंने कुछ किया, so now I have to remember this is how I did. Yeah. And many times I'm looking at like a piece of paper which gives me the eyeline of the person. Then also I'm trying to imagine my own face because when we are talking, I'm talking to you, no? Yeah. My eyes also travel. My subconscious brain is reading your micro expressions. So my eyes are never static. My eyes will always have movement. नहीं तो dead eyes हो जाएगा ना. मैं पूरा अपना सारा डायलॉग ऐसे बोलूँगा तो वो eyes में कोई जान ही नहीं है, है ना? तो वो real person का वो illusion कैसे create होगा? Shatter हो जाएगा. So I have to be conscious of that also. So is it challenging that way? Very challenging technically. मुश्किल होता है, and you have to be mindful of all of these things. And you get like somebody who's reading the cues with you, and many times in my case it's usually a stuntman because my stunt double would do that. They're not really actors, poor chaps. They're really good with the stunt work, but they're not really good at like delivering lines. So and sometimes you get people who are very nervous doing acting करवा रहे हैं मुझसे, but I have to make do with that. Yeah, I have to make do, na. I can't like. That's all I have. This is what I have to work with. So correct. It can be challenging in such technical ways, but performance के लिए if you're well prepared, then it's easy peasy, man. Right. But then अनुराग कश्यप ने कहा था ना कि इस फिल्म में जो आपका रोल है, it is very Tiger Shroff वाला action. yeah, Tiger Shroff वाला. So कितना pressure हुआ Tiger Shroff का abs and pecs and all these things like. No. I don't think I'm at anywhere close to that level. Tiger, Vidyut, they are like top tier.
सो मैं तो ऐसे मिडिल टियर का भी नहीं हूँ, मतलब मुश्किल से ऐसे मिड कार्ड. बट आई थिंक आदित्य डिजाइन्ड सेट पीसेस दैट ऑल्सो पुश्ड मी, बट समथिंग दैट आई कुड पुल ऑफ एज वेल, कि दैट विल लुक गुड ऑन मी. तो उसका एस्थेटिक ऐसा है कि इट शुड लुक गुड ऑन मी. अगर मुझसे ऐसा कुछ करवाएगा वो जो मैं कर नहीं पाऊंगा, अगर किया भी तो ऐसा अजीब लगेगा, वो नहीं करवाएगा वो मुझसे. So we had 4 different action directors because there are a lot of different styles in of all these set pieces were then. And action is something that Aditya is very interested in. That's his thing. Okay. So he takes a lot of interest in designing those set pieces, and he has a vision for all of those things. But do you enjoy action? Yeah, I did. Because मर्द को दर्द नहीं होता में भी आपका था ना उसमें भी. I did. I take my time. I'm not like it doesn't come very naturally to me. I think I have a certain athleticism naturally because बहुत sports खेलता था मैं, but I lack the endurance or the skill set that is required to be a proper action person. Okay. So I had never really developed it. Like usually क्या होता है कि कुछ लोग शरीर बना लेते हैं, looks पे focus होता है, डांस सीख लेते हैं, और थोड़ा बहुत वो डांस होता है तो फिर जो अच्छे से कर लेते हैं तो बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक एंड्योरेंस आ ही जाता है. सो दे आर एबल टू इंटरप्रेट the choreography of action also, because at the end of the day it is choreography. Right? So वो डांस नहीं लगना चाहिए, पंच वो लगना चाहिए. So I interpreted as dialogue. इसको explain करो और. So a punch is not a punch, a kick is not a kick. अगर मैं it's dialogue, it's words. Like it has to mean something. कि मैं I have to hit you. We like if it's a closed fist, then why is it a closed fist? If it's an open, then why is it? I interpret it as dialogue. I imagine it as dialogue and not as choreography. Fascinating. Okay. हाँ, तो then I'm able to articulate that. Yeah. नहीं तो वो सिर्फ एक लात लगेगा, एक ये लगेगा, वो तो बहुत लोग मारते हैं. So you like But what is it? दो लोगों के बीच में लड़ाई क्यों होती है? जब बातों से ये नहीं होता, then it goes to लड़ाई ना, कि हो बात नहीं कर सकते. We have to go beyond that. Yeah. And usually fights are started like that. या तो किसी का patience खत्म हो गया, या बातों का अभी लातों का टाइम आ गया, बातों से काम नहीं हो रहा है. Right. So you've crossed that boundary, but it's still expression, right? It's a disapproval or something like self defense or something like it is something. It means something. So I realized this during Mart Ko Dard Nahi Hota, because me and Vasan were discussing, and then he said this, it's like kicks and punches are not kicks and punches, it's dialogue. So there's this quote na ki a picture is better than 1,000 words. Is a punch also better than 1,000 words? No, if it means something, it has to mean something. So why am I punching this person? So usually action directors आके एक set piece design करके जाते हैं कि ये. But what am I feeling towards you? If me and you are fighting with each other, there is something that has urged us, motivated us to do this, na? Yeah. To assault each other. So that you have to hold on to it. So then I interpret it as dialogue. Yeah. So that helps me express. Okay. Because I don't have the same skill set as Vidyut or Tiger, because they're highly skilled at martial arts and stunts. Yeah. The martial arts अलग चीज है. A lot of martial artists will not be able to do what they do. Okay. Because they're also trained in performing in front of the camera. Which is a completely different skill set it requires. Okay. Because if sometimes जैसे मर्द को दर्द नहीं होता में, there were some real taekwondo people who had to do a fight. I had to keep reminding them because उनका instinct मारने का होता है. मारने की एक्टिंग करने का नहीं होता है. Correct. हाँ. है ना? तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि एक्टिंग चल रहा है, वो गलती से मार मत देना. Because they are trained to connect actually, na? Right. If they are professional fighters, competition fighters, they are trained to connect. They are not trained to like बचा के मारेंगे. But फिल्म में हम करते हैं ना, we are trained to बचा के मारना. And we are trained to take the reaction, how to sell the punch. Like if you punch, you can't really punch me. I have to sell that punch कि कितना लगा. कुछ नहीं लगा. या दांत निकल गए मेरे बाहर. Okay. So that is a skill set altogether. So you can be a very experienced martial artist, but if you don't know how to contain it and use it in front of the camera for a performance, then what is the use? Yeah, makes sense. So these two guys are highly skilled at that. Okay. So आपको कभी लगा like when you were performing these stunts and everything, या किसी के साथ में fight scene है तो पहले लग चुका है, but not during Bad Cop. Okay. Yeah, I'm very careful. I'm really वो sort of बहुत ही obsessed with safety. कुछ ज़्यादा ही.
जैसे इधर से उधर भागना होता है तो आई विल गो रेकी द प्लेस माई सेल्फ, आई सी कि कील विल तो नहीं है, कंकड़ पत्थर कहाँ है, उबड़ खाबड़ है, क्या है इधर, स्लिपरी तो नहीं है, मेरा जूता ग्रिप पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है, एंड देन अगर जूता ग्रिप नहीं पकड़ रहा है तो व्हाट इज द वे अराउंड इट, मैं क्या कैसे कर सकता हूँ. यूजुअली वी वेट द सोल्स और वी पुट सम स्टिकी एरेटेड ड्रिंक्स, तो यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ स्टिकीनेस ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड थिंग्स लाइक दैट. सो अगर कहीं से कूदना है तो इधर कूद के इधर भागना है, तो यहाँ पे ये गली में क्या है, वहाँ पे कोई कटर स्टैंड रखा है, लाइट तो नहीं है, कोई लोग खड़े तो नहीं है. सो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ ऑल दिस थिंग, बिकॉज यूजुअली ऐसे छुटपुट घटनाओं से ही मतलब छुटपुट चीज़ों से ही बड़ा हादसा हो जाता है. करेक्ट. ओके, बट देन कभी लाइक व्हेन यू आर ग्रोइंग अप थक जाता हूँ यार, लेकिन मैं वो मेरा प्रॉब्लम है कि वो एंड्योरेंस नहीं है मेरे अंदर. ओके, बट देन यू आर वेरी फिट. फिट लुक नहीं होता, डिपेंड्स. फिटनेस इज सब्जेक्टिव टू व्हाट. कि इफ यू हैव टू रन इन हाई एल्टीट्यूड देन द फिटेस्ट लुकिंग पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू इट. हाँ, मेक सेंस. या okay. Fitness is subjective too. So endurance is something, because when you have to do a physically strenuous activity over and over again, then you need cardiovascular endurance, right, and you need joint stability and strength. Your joints have to do the same thing over and over again. You have to be able to load your joints. Yeah. And with age भी होता है, genetic भी होता है. मैं genetically दुबला पतला आदमी हूँ, so muscular strength इतना नहीं है. Okay. लचीलापन है, I am like एथलेटिसिज्म है, बट एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ इतना नहीं है. सो आई हैव टू ट्राई एंड कॉम्पनसेट. सब इधर है गुरु, इधर सब कुछ है, बाकी सब शो दिखावे के लिए. बट देन व्हेन यू आर ग्रोइंग अप कॉलेज इयर्स में भी कभी मार पिटाई की है किसी के साथ? नहीं यार, पिटा हूँ एक दो बार, बट मैंने कोशिश भी किया है, बट आई कांट, आई एम नॉट द मार पिटाई वाला. क्यों पीटे थे? फैंटेसी में बहुत पिटा है गुरु, असलियत में कुछ नहीं. पर पिटे एक बार कोशिश किया था किसी को मारने का, मैं हुआ ही नहीं मुझसे. लगा ही नहीं, मुझे लगा मैं मार रहा हूँ उसको, कुछ हो ही नहीं रहा. ओके. पिटा हूँ, ऐसे होता है. समटाइम्स पीपल ट्राई टू इंटिमिडेट यू, तो वो जेब से पैसा वैसा निकाल देते थे किसी मसले के ऊपर. क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ उनकी फाइट थी, तो दे जस्ट वांटेड टू लाइक यू नो, हर किसी को मतलब 2-3 चांटा पड़ेगा तो ये लोग से सुधर जाएंगे. आई वॉज नॉट इन टू ऑल दोज थिंग्स. वो तो होता है ना, ये इनका गुट है, उनका गुट है, ये गैंग है, वो गैंग, वो सब. मेरा स्कूल का दोस्त था, तो उसकी एक बार फाइट रोक दी मैंने किसी और के साथ में. उनको लगा मैं इनके साथ में हूँ, क्योंकि इनके साथ मैं घूमता था. तो किसी ने बुला के सबक सिखाने के लिए 2 चांटा लगाया. आई वॉज लाइक, मैं तो हूँ ही नहीं गुरु, मैं तो आप लोगों के, मैं तो सिर्फ फाइट रोक रहा था यार तुम लोगों में से. तो फिर देन somebody else who knew me, who liked me, they spoke to that person कि बोले कि नहीं, इसको परेशान नहीं करेंगे. सब देखा है मैंने यार, गुंडागर्दी, सब लोग बड़े बड़े गुंडे, और जो ऐसे इलेक्शन के टाइम पे भर के लेके जाते थे लोगों को. मैं भाग जाता था, टॉयलेट में जाके छुप जाता था. आपको वो टेम्पो में लेके जाते थे, पैसा और खाना मिलता था इलेक्शन रैली में. मोबिलाइजिंग क्राउड्स ना. सो सब ये सब मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट इज इट मीन बाय मोबिलाइज्ड क्राउड्स, कि कितने सारे रैलीज में इतने सारे लोग कैसे जमा हो जाते हैं. हमारे यहाँ भी होता है. ओके. ये सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं करते, हम लोग भी करते हैं मोबिलाइजिंग क्राउड्स. बताओ ये कैसे करते हैं? लोग जमा करने से. इफ यू गोइंग सम प्लेस, इफ देयर इज नो क्राउड, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग ना. इफ आई हैव टू शो दैट कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, सो देन यू हैव टू मोबिलाइज. इवेंट्स पे होता है यूजुअली, आप किसी इवेंट पे जाते हैं तो क्राउड्स आर मोबिलाइज्ड. you're made sure that there is like 500-600 people there. अच्छा, so this is like an open secret. ओपन सीक्रेट तो नहीं है, मैं भांडा फोड़ रहा हूँ ना थोड़ा. अच्छा. So that's my share of bubble bursting. आपको पता है अपने रेडिट, आप कभी रेडिट चेक करते हो खुद के बारे में? हाँ. उस पे मैं एक थ्रेड पढ़ रहा था, मुझे पता चल गया था. उसके बाद मैं मतलब जब भी याद आता है तो मैं जाके देखता हूँ. अरे बहुत अच्छी बातें करते हैं यार. आई एम सो ग्रेटफुल. ये आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ऑल्सो. ये मैंने कमाया है यार, इज्जत मैंने लोगों का इज्जत और प्यार ना वन एट अ टाइम करके कमाया है. ऐसी वाली फीलिंग आ रही है. आई एम सो ग्रेटफुल. आई वॉन्ट टू पर्सनली थैंक देम एंड शेक देयर हैंड्स and I don't know, I have hugged them or something like that. Probably they'll lose a little bit of respect. They'll want me to be like, "Hey, bhai, don't do all of these things." but that's how I feel, yeah. राइट. बट देन पता है रेडिट पे आपके बारे में एक थ्रेड है, बिकॉज आपने 2 जगह पे 2 भांडे फोड़े थे, ठीक है. एक इंटरव्यू पे आपने दीपिका एंड रणवीर वाला वो बता दिया था, एक पे आपने विजय वर्मा एंड तमन्ना भाटिया को बता दिया था. आज के इसमें क्या बताने वाले हो? आई वाज वेरी एक्सपेक्टिंग कि आप और भी किसी का भांडा फोड़िए. I don't know, paparazzi, there's no paparazzi. It's just for show. Yeah.
ये तो लेकिन अब सबको पता है कि लाइक वो रेट कार्ड वगैरह होता है, उसके अकॉर्डिंग वो पापराजी को बुलाया जाता है। रेट कार्ड का हाँ, वो तो रेट कार्ड का मालूम नहीं, लेकिन यू कैन इन्फॉर्म द पीपल, इट्स पार्ट ऑफ द PR पैकेज, लाइक व्हेन यू साइन अप विद PR कंपनीज ना, सो सम ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द पैकेज। आपने लिया that you're paying कभी retainer. ऐसा कोई PR पैकेज? That's my publicist sitting right over there. They're on retainer, monthly retainer. अब कितने का retainer ये नहीं बताऊंगा, but they're on monthly retainer. Yeah. I didn't know how to use it's a ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी है, क्योंकि पहले मुझे लगता था नहीं ज़रूरी है. I thought being good is good enough. Then I started to realize being good is not good enough. Because it's so there's so much noise. Yeah. और मेरा भी है ना, मैं 2011 ना, उसके बाद social media was picking up at that point of time, slowly. So I was in that transitional phase. Right. It's so difficult to keep the attention on you for anything. So people remember you from your work, what you did last. And what you did last was like some 6 months ago, then they've mostly forgotten. So then how do you make sure that you are consistently getting work? Right. So then I didn't know how to use PR, because I thought कि there's some cookie cutter system कि ये करो ये करो ये करो ये करो. फिर मैंने कोशिश किया, फिर मुझे लगा कि ये consistently ये इवेंट्स पे जाना, रिबेट नहीं होगा मुझसे. I can't do it. That's not me at all. That's not why I'm in this business. But I understand and acknowledge the importance of a publicist. Right. But how is it how can I make it relevant to me and how can it be authentic to who I am? उसको समझने में टाइम लग गया और काफ़ी पैसा भी वेस्ट हुआ, बिकॉज वो फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा. सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट. तो ये एक एडवांटेज है कि लोग यहाँ पले बड़े होते हैं ना, उनको ये सब मालूम होता है हाउ एवरीथिंग वर्क्स. ये नॉलेज ऑलरेडी है. Yeah. मेरे जैसे लोग ना, सीखना पड़ता है हमको. दैट इज द ओनली एडवांटेज. एंड ऑफ कोर्स एक्सेस. Yeah. These are the only two major advantages people have who are जिनको ऐसे गाली देते हैं ना, नेपो किड्स. उनको अपने आप को साबित करना पड़ता है. बट देयर एडवांटेज इज दिस, दे ऑलरेडी नो हाउ थिंग्स वर्क, हाउ इम्पॉर्टेंट परसेप्शन इज, हाउ टू यूज पब्लिसिटी, हाउ डज द होल बिजनेस ऑफ सिनेमा थिएट्रिकल रिलीज वर्क, Right. पब्लिसिटी डिजाइन, हाउ डू दीज थिंग्स वर्क, व्हाट आर अवार्ड शोज, वो टेलीविजन पे क्या माइलेज मिलता है, हाउ इज इट पैकेज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन. दे अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस बिफोर. हमको आके सीखना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है. But then are you like PR trained now properly? आई डोंट नो, बट देन आई एंजॉय इट नाउ. क्योंकि आप ना, मैंने जितने भी आपके इंटरव्यूज वगैरह भी देखे, यू आर वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग. सो आई एम See, I'm here with you, na? Yeah. I'm here with you. Yeah. This is a PR exercise for me. But I am presenting my authentic self. I don't want to come here and pretend to be somebody else. Right. Or exploit your viewership or anything like that. But it is a PR publicity exercise Sure, for me. that is. I will admit to it, and which is why you want guests also on your thing, because you want viewership. Correct. अभी किसी को लाएंगे जो अनइंटरेस्टिंग है, किसी को पता नहीं है, एंड दे डोंट हैव एनी व्यूज और एनीथिंग or anything, you are not going to talk to those people. Exactly, People yeah. you feel are relevant to your channel and who you think that you can have an interesting conversation with, unko लाएंगे. It is the same with me. It's the same with me that I am also trying to reach out. Here I am reaching out as Gulshan Devaya. I'm not reaching out as any of the characters. So maybe you will find me interesting. Maybe some of my contrarian views might resonate with you, or maybe not. Or maybe you will think that नटकेस कुछ उटपटांग चीजें बोलता रहता है और विवेक अग्निहोत्री को ट्रोल करता रहता है. So maybe that is entertaining for them. But then because you have opinions and आप ट्विटर पे भी everyone has seen everything, आप जिस तरह से ओपनली सब कुछ मतलब बोल देते हो जो है मन के अंदर. सब कुछ कहाँ बोलता हूँ, सब कुछ नहीं, बट अप टू सम एक्सटेंट. सब जो लोग कुछ तो नहीं बोलता ही बोलेंगे. नहीं मैं. सेलिब्रिटीज यूजुअली, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट टर्म, बट सेलिब्रिटीज हमेशा प्रेफर नहीं करते ना इतना ओपनली किसी भी चीज़ के बारे में बात करना. ये उतना सब मालूम नहीं है यार. ये तो बहुत जनरलाइजेशन हो गया. अब मैं हूँ तो मेरे बारे में मत करते हैं. ये बहुत जनरलाइजेशन हो गया. बट देन दैट मैं भी इज सब कुछ असम्पशन तो यही है लोगों का. नहीं, वो हर हाँ में हाँ नहीं मिलाता मैं. हर चीज़ को मैं उठाता नहीं हूँ. हर किसी का झंडा नहीं लहराता मैं. आई ओनली डू स्टफ which I feel that I should do. And sometimes I type stuff and I delete it. Okay. But I feel like it's too much. ये क्यों कह रहा हूँ मैं? क्या ज़रूरत है बकवास करने की? ठीक है, it will be funny. And then some people will retweet it and say ha ha ha, और किसी के ऊपर हंसेंगे. But क्या ज़रूरत है? मैं delete कर देता हूँ. So जिस तरह से आप मतलब अभी मेरे everyone has like these different images of themselves जो वो हर जगह पे accordingly portray करते हैं. Are you the same person जो घर पे होता है वही बाहर जाने के बाद भी? वही है, same person. अभी जैसे मैं तुमको मिल रहा हूँ ना, तो I want to be the same person on my social media. Yeah. Okay.
But there then, is a sense of propriety. There are lines, clearly there are lines and boundaries that I don't want to cross. yeah. कुछ social boundaries है जो हम accept कर लेते हैं, कुछ अब हम खुद बना लेते हैं boundaries. And contrary to the person that I troll, freedom of expression is not absolute. It has to be counterbalanced with social responsibility. True. तो आपको लेना पड़ेगा. Whereas most people, they want freedom of expression, but they don't really care about other person's freedom of expression. If that is the case, then freedom of expression cannot be absolute. True. It has to be conditional. तो क्या है आपका कल्चर, क्या है आपका संविधान, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा क्या, what are your social, what kind of society you live in, right. कितना प्रोग्रेसिव है, कितना रिग्रेसिव है, क्या हद. So all of those things will dictate some sort of social responsibility. And then if you are say a known person, a person of some reputation or a public figure जैसे कहते हैं ना, then you have to be probably take a little more responsibility of that, because your reach is a little हाँ, क्योंकि आप तो कुछ भी wider बोलोगे than- वो मैग्नीफाई हो जाएगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि क्या बोल रहे हो. केयरफुल की बात नहीं है कि वो responsible बोलता हूँ मैं. रिस्पॉन्सिबल इज द राइट. करेज होना और इम्पोर्टेंट है, जो कसम से मेरे अंदर नहीं है. आई एम नॉट नियरली एज करेजियस एज इवन विवेक अग्निहोत्री. इज अ वेरी करेजियस मैन, बट रिस्पॉन्सिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल. और मैं वही है कि उम्मीद है कि एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट वही है कि फ्रीडम जब मिलता है तो वी वांट टू डू व्हाटएवर विद इट. राइट. जैसे कि नया नया टीवी लगा है घर पे, 10वीं का एग्जाम देना है, बट घर पे माँ बाप नहीं है, तो क्या है, देखो टीवी. दैट्स बीइंग इररिस्पांसिबल ना. या. I didn't think so myself, but now I would say that was me being irresponsible. या. विवेक अग्निहोत्री के साथ में क्या सीन हुआ था? Like, because I have seen the banter between you. I had the best professional relationship with him. He's a fascinating man. किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो बात कर सकते हैं. He is very knowledgeable, learned, well read. Yeah. जो मैं नहीं हूँ. और उनके variety of interests हैं. Insincere लगते हैं मुझे the way he kind of portrays certain things on. Exactly, what does that mean? Like, insincere लगते हैं I think it's मतलब? self-serving. It is like he says things in order to sort of either cater to an idea that will help him. But then isn't... I have no issues with any of the films. He's a filmmaker. He's free to make any sort of film that he likes, that the censor board will allow. Because we do have a censor board, which kind of keeps the balance. I do believe in having that counterbalance. And contrary to what he himself says that freedom is absolute, I don't believe so. Freedom is counterbalanced by social responsibility, which we should be able to take. And we can negotiate that. We can sit and negotiate कि ये social responsibility के norms क्या है. But I think वो होना चाहिए. Which is why we have opposition and which we have the government and the opposition, na? Position and opposition. We have that because that is in a democracy you need a counterbalance. But then जो आपने उनके बारे में चीज़ कही, isn't every person at some level like that कि मतलब at the end of the day हम सब खुद के ही अपनी interest serve कर रहे हैं ना? Maybe so. Maybe you have something to say over there. Yeah, sure. And मतलब I agree with you up to some level, but then again because I have had a conversation with him, of course So not. that way anybody can do anything. Exactly, na? Then yeah. we should have Not- we shouldn't have yeah, any yeah. problem with anybody doing anything. Na? किसी ने कुछ बोल दिया था, हाँ ठीक है अपने इंटरेस्ट के लिए. I don't think everybody is self-centered and self-important, which is something that I would categorize him as. I don't really like bringing too much attention on him. लेकिन आपने, because he's been a guest also, I don't want to seem like I'm dodging the question also. Yeah. So I want to be honest and upfront about it. I don't think that I've got everything right, but मेरा reading, I've spent a lot of time with him. Yeah. That doesn't make me an expert on him, but that makes me aware of what I think he is. And I feel that many times he's irresponsible and sometimes he's my reading of him is self-important and self-serving person. Are you narcissistic? Sometimes I may be narcissistic, as in I'm not a clinical psychologist to sort of diagnose myself. But how do you mean? What do you mean by narcissistic? It is very tough to categorize Some people it. say this about Vivek Agnihotri. Actually, one of his followers had I really even I have the same opinion about that. Yeah. But मेरा तो ये मानना है कि मैं खुद भी मतलब narcissistic हूँ. Every content creator at some level is. This is just my feeling. But what is that level? Na? The level is important. Ki what level? What is that level? How does that level impact
other people. That So is, I'll put that in different words. When you go somewhere, आपका मन कभी अंदर से कहता है कि attention should be on me. but that's not narcissism. It isn't. No, that's not you being narcissist. Hmm. I mean, I don't really know what is the dictionary meaning of narcissism, but if maybe like I'm from the entertainment business. Yeah. Almost 100% of the people when you're in a room are trying to do that. So I'm used to that, but it's not really. But there are levels to it. When it gets to when it's at a harmless level, when it's just playful and entertaining, then it's fine. But it's not really about attention, but what that attention, how it is serving you. Like self-important people का problem होता है ना, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं हूँ ये साबित करना होता है. Correct. Nobody is more important than me. There is a problem in being that. I have an issue with people being that. आप मिले हो कभी ऐसे लोगों से इंडस्ट्री में? बहुत लोगों को मिला हूँ. बहुत लोगों को मिला. मेजॉरिटी लोग वैसे ही होते हैं? नहीं. Some people are like that. Majority of them not. But majority of them want attention because we are in that attention. True, seeking, which is fair. Attention is currency for us. Like the more attention you have, the better, the more useful it is. Right. So that is the way I look at it. And if वहाँ तक सीमित है तो ठीक है. बट ये सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ सर्विंग, सब कुछ मुझे ये नहीं है, मेरे लिए अप्लाई होता है लेकिन उनके लिए नहीं है, तो आप ना रूल्स अपने हिसाब से बदलने लगोगे तो फिर देन आई हैव एन इशू विद दैट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल ट्राइंग टू कीप द अटेंशन ऑन देमसेल्फ. थोड़ा लॉन्ग वाइंडेड जा रहा है बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू आर्टिकुलेट माई सेल्फ. आई एम नॉट द मोस्ट आर्टिकुलेट पर्सन, सो आई एम ट्राइंग टू गेट टू द पॉइंट दैट आई रियली वांट टू मेक, जो इतनी आसानी से सरलता से हो नहीं पा रही मुझसे. People seeking attention on themselves, why are you seeking attention and what do you do with that attention? That also sometimes remains to be seen. That is important. Self-important people, because they think they want to be important, they will do everything, and sometimes they will bend the rules and be a little unethical also. They'll put somebody down just to make themselves feel more important or elevated at status. Now I have an issue with that. If somebody is trying to do that with me, maybe sometimes I may allow them to do it. Right. Because feel like ठीक है, I'm not going to get into this. मेरे को नहीं चाहिए ये सब. ठीक है, तू कर ले भाई. तू राजा, चल. मान लिया. तू रानी, चल. मान लिया. ठीक है. But sometimes I'm not willing to do that. Sometimes I want to call that out. That saying that no, you're being like a bit of a a self-important person. कि हम ही important है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है. तो उनके opinions जिस तरह से बात करते हैं, सब ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, सब चीज़ों के बारे में, बाकियों को कुछ आता ही नहीं है. एंड एवरीथिंग दैट दे डू इज टू केटर टू देम एंड देयर इमेज एंड व्हाटएवर दैट दे आर डूइंग, दे आर प्रोजेक्टिंग. But that happens because of the people around them, right? Like, I'm assuming happens with them also. कोई खुद से तो ये नहीं कहता ना खुद को कि I am the most. मैं जो भी कहता है वही होता है. That is one thing. But then ये जो feeling आती है कि I am more important than you, वो तो जो आपको सोसाइटी जिस तरह से ट्रीट कर रही है उसके वजह से आता है ना. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो समवेयर, मुझे शायद उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा जितना आपको मिलेगा. मांग के इंपॉर्टेंस लेगा तो लोग देंगे ना. मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक सोसाइटी आपको इंपॉर्टेंस दे रही है तो ले लेना भाई. और तुम मांग रहे हो ना इंपॉर्टेंस, यू आर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर यू सीम इंपॉर्टेंट. ओके, दैट इज लाइक यू आर इंजीनियरिंग दैट थिंग टू सॉर्ट ऑफ मेक यू फील इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट अटेंशन, टू मेक यू लाइक important. Right. This is just my understanding of it. I am no expert on this. I could be totally wrong about all of these things, and I will eat my words and eat my shots if I'm wrong. मैं claim नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बोल दिया तो ऐसा ही है. नहीं कर रहा. ये मेरा opinion है. जैसे opinions बहुत लोगों के भी जब ये इलेक्शन में हुआ, बहुत लोगों के opinions गलत साबित हुए. करेक्ट. हाँ, वो तो एग्जिट पोल से पता चलता है. बिल्कुल एग्जिट पोल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत लोग गलत साबित हुए. होता है यार लाइफ में, एक्सपर्ट से गलतियां हो जाती है. अब मैं तो एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, ये तो मेरा वो पर्सनल ओपिनियन है. या बट आप किसी के बारे में आपके साथ में इसीलिए कॉन्वर्सेशन करना इज सो मच फन, क्योंकि यू आर वेरी ओपन इन द सेंस कि आप खुद को रोकते नहीं. एज एन जो मैं पहले भी बात कह रहा था ना कि आप जैसे आपका ओपिनियन है तो आप वो ओपिनियन बोलोगे एंड देन यू ऑल्सो से कि मैं हो सकता है गलत भी हो. हाँ, काफ़ी बार गलत भी हुआ हूँ मैं. हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है. विच इज मतलब कोई भी हो सकता है वो तो. Yeah, but in some, हो सकता है, but I have some experience in some things. So कुछ मामलों में मैं
एक हद तक मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आई थिंक आई कैन बी प्रीटी श्योर अबाउट थिंग्स, बट आई ऑल्सो हैव टू गिव यू कांट बी श्योर अबाउट एनीथिंग 100% ऐसा ही है तो बोल ही नहीं सकते. आपको कन्फ्रंटेशन करना पसंद है लोगों से? नहीं, बिल्कुल नहीं. मिलजुल के काम करने में ही पसंद है मुझे. कन्फ्रंटेशंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट समटाइम्स इट्स अनअवॉइडेबल बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ पुश ओवर आइदर. As a person, as a professional, I don't want to be a pushover. Do you get pushed over? I hate people. Like I in the used to industry, get pushed in the over. industry. Used to a long time back. Abhi I know how to protect myself or to evade such situations. I always try and evade situations first, and then I'll sort of, I've learned some ways to protect myself. Yeah. I was very naive when, pehle, as in like in my teens, and people used to easily take advantage of me, and I hated that. But then I realized it's not people's problem. It's my problem. I am letting them do it to me. So if I don't let them, then they won't. The other thing which I really wanted to talk about was कि एनिमल जब फिल्म आई एवरीवन हैड देयर ओपिनियंस एंड बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन थे. कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे, कुछ लोग थे जो बैन ही कर दो फिल्म को. एंड यू सेड कि क्योंकि हम विवेक के बारे में बात कर रहे थे, यू सेड कि उनको जिस तरह की फिल्म बनानी है वो बनाने दो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. सो डू यू थिंक, मतलब वेयर डू यू स्टैंड इन दिस होल डिबेट? आपको जो फिल्म बना, अगर सेंसर बोर्ड अलाउ कर रहा है इस फिल्म को रिलीज करने के लिए, दैट्स अ लीगल सर्टिफिकेशन. तो यू कैन शोकेस योर फिल्म. बट देन एनिमल के साथ, बट देन यू शुड बी ओके विद पीपल हैविंग ओपिनियंस विद इट आल्सो. True. Because if you have your right to tell your story, then it's other people's right also to have issues with it. But try and be civil about it. The problem is that we're not civil about it. We go across it as like cutting people down. Yeah. Like, अरे बक्का क्या समझता है अपने आप को, संदीप रेड्डी वांगा, वही है, he is a misogynist, he is that. Yeah. और वो भी गरम खोपड़ी है. आप इतना सब बोलो तो वो भी वहाँ पे उसने भी दिया जवाब में, है ना? वो है वो many of the interviews he himself went on an attacking spree. या तो वही होगा ना. But then अभी यहाँ पे तुम और मैं बातचीत कर रहे हैं, है ना? तो we don't have any, well, you're not trying to antagonize me, I'm not trying to antagonize you. So it's a very civil conversation. And sometimes you are asking me questions that are putting me in a bit of a spot also, because I have to open myself and I'm like, don't dodge these questions, because I don't want to be a person who will dodge questions कि नहीं इसके बारे में बात नहीं करेंगे. So I'm doing my best to be my authentic self and honest and sincere. At the same time, not to like unnecessarily put anybody down. right. Yeah, but that doesn't many other that's because that's the energy and that's the environment. हमारी शुरुआत ऐसे हुई and we both agree without actually talking to each other that's how this is going to go. Correct. That's how people are. In a civilized way, we will talk to each other. It's understood. But कई बार with film criticism, it's ऐसा हो जाता है कि कुछ बोले बुरा मान गए आपका ego hurt हो गया. And then also when happens is when a film is enormously successful, then the ego of the other person also is inflated. Now they can say कि तुम होते कौन हो मुझे criticize करने वाले. So yeah, you have a right to make your film and the audience has the right to be critical of it. Let's try and be civil about it. बट देन द प्रॉब्लम हियर इज, मतलब मैं किसी का साइड नहीं ले रहा यहाँ पे. एक गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग भी था ना कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तब तक लोग वो बनते रहेंगे. बट देन क्योंकि इट्स जस्ट अ कूल लाइन. बट देन सिनेमा अफेक्ट करता है ना लोगों को. हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें होती है, आइदर इट इज़ जो तरह की फिल्म्स बनती है वो या तो मिरर है या वो किसी तरह से सोसाइटी में जो चीज़ें होने वाली है उसको दर्शाता है. एंड पीपल हैड दैट प्रॉब्लम विद द फिल्म कि मतलब वहाँ पे बिकॉज इट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक विमेन के अगेंस्ट वायलेंस था उसमें. तो दैट वॉज द प्रॉब्लम. जिस तरह से उसमें उस एक्ट्रेस को ट्रीट किया गया था, मतलब उस कैरेक्टर को ट्रीट किया गया था, दैट वॉज रॉन्ग. एंड पीपल हैड देयर ओपिनियंस अबाउट दैट. Absolutely valid. That's why I've said, na, people are valid to have their opinions. Can we be civil about it? That's the thing. And to answer the earlier part of your question as to cinema affects our psyche and like art reflects reality reflects art. So that's the chicken and egg question. Now you tell me, is the chicken more important or the egg? You have no idea. True, yeah. Nobody knows. If it's a philosophical question, nobody knows. Even biologically also, I don't know. Maybe some scientists will have some theory, but if it's a philosophical question, we don't know. We don't know. Is it a philosophical question? Whatever. It is. I'm not an expert, so don't. No. It is one of the most important questions. But be civil about it. We don't know. Yeah. So does art reflect reality, or does reality reflect art? We don't know. But we know that both are necessary. The chicken is important for the egg to be laid, and the egg is important for the chicken to be born. So they both are
and some people's art reflect reality, some people's reality, for some people the reality reflects art. It's how you perceive it, and that is the beauty of art. It's not confined to कि यही है. You can have different interpretations, which is a problem when it comes to like actors, because you can't control perception after a certain point. Yeah. So we try and like dress nicely, and we have PR managers come with us and all these things. We're desperately trying to control how people look at us and how they perceive us. Anyway, that apart, so it's all in the perception. Some people are much better at it, at expressing themselves through art, and some people are much better at expressing themselves in reality. Yeah, which is very beautiful. मतलब जिस तरह से आपने पूरा वो आर्टिकुलेट किया है. तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, बट इट्स ऑल्सो लाइक लॉट ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से. एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा कि कन्वीनियंस के हिसाब से दल बदल जाता है. आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, अरे ये सोसाइटी को अफेक्ट करेगा. आपको फिल्म अच्छी लगी तो ये अच्छा अफेक्ट करेगा. फिल्म बेकार लगी तो आपको लगेगा कि ये सोसाइटी को कुछ घंटा फर्क पड़ेगा. तो ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हो गया. करेक्ट है ना. ये कैसे डिसाइड कर ले हो आप? ये प्योर कन्वीनियंस है, विच बिकॉज इट्स टू मच इज सिनेमा इज ऑल्सो नॉट एज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक इट डजंट हैव द पावर आइदर. तो ये वाला जो है बैरोमीटर, वो कन्वीनियंस के हिसाब से व्हाइट एंड ब्लैक हो जाता है. राइट. कि आपने कुछ दिखाया वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ओह सब लोग अब करने लगेंगे. एंड एक्चुअली वैसा होता नहीं है, बाय द वे. मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना. बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक सिनेमा does not have any influence. It is capable of having any. It depends on the degree. कितने डिग्री तक वो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपको. अब मतलब उसमें अगर दिखाया है, ऐसे कि एक फिल्म देखने से पूरी सोसाइटी नहीं बदल हाँ, रही है. correct. बदला है क्या कभी? कभी नहीं हुआ. You give me one instance, anybody who's done any kind of data collection, कि एक फिल्म के आने से पूरी सोसाइटी बदल गई. I don't think so. Even the Nazis, अभी जस्ट उदाहरण के लिए मैं Nazis को ना दो, their propaganda also years and years चला था. तभी जाके लोगों का दैट्स हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स. आपने एक आर्टिकल निकाल दिया तो ये नहीं होगा. रिपीटेडली ओवर द इयर्स एंड इयर्स वो चीज़ को करते रहना पड़ेगा एट डिफरेंट वेरियस लेवल्स. हल्के से स्टार्ट होता है एंड देन देयर आर वेरिंग डिग्रीज टू इट. ओनली देन. सो इवन पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर कोई आर्ट से हो सकता है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. लाइक चाहे वो समाज के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में हो या किसी जातिवाद के बारे में हो, ऐसे रातों रात नहीं बदल जाएगा. ट्रू है ना. रातों रात नहीं बदल, उसको टाइम लगेगा. सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली बी एट इट. सो इट डज हैव द पावर ऑफ अफेक्टिंग पीपल और स्क्रूइंग विद देयर हेड. इट डिपेंड्स ऑन हाउ द कंसिस्टेंसी. या एंड इसका एक्चुअली एक बेस्ट एग्जांपल है. अगेन मतलब आई डोंट वांट टू ब्रिंग इन विवेक हियर, बट देन अगेन उनकी फिल्म है कश्मीरी पंडित्स पे थी जो कश्मीर फाइल्स. तो फिल्म के बाद में एक्चुअली नथिंग चेंज. बस ये हुआ कि अवेयरनेस बढ़ गया उस इंसिडेंट के बारे में. बट एक्चुअली जो उनकी वहाँ पे कंडीशन थी कश्मीर में उन पंडित्स की, वो उसमें कोई चेंज नहीं है. दिस इज लाइक प्रूवन बाय डेटा, गवर्नमेंट डेटा. मैं खुद से भी नहीं बोल रहा हूँ. I have no idea. I watched the film eventually. I thought it was okay. As a film, I thought it was okay. It resonated with people. It moved people to tears and all of this. मुझे नहीं आया रोना. And it's also not like कि जो वो कैंपेन था ना कि पता ही नहीं है कश्मीर का. मुझे तो काफ़ी कुछ मालूम था. I have met people who have lost fathers and who don't fester any animosity towards any particular sect or religion or type of people. Who've lost people in their family. मतलब कॉलोनी के लोगों ने गोली से उड़ा दिया, वैसे वाले लोग भी हैं. So there are all kinds of people. So of course we feel that कि ये हमें सिखाया नहीं गया या कवर नहीं हुआ. मतलब बचपन में I was born in 78. So when this whole exodus was happening, I remember watching it on TV. Yeah, you were like उस टाइम पे 20 साल के आसपास. I remember watching it on TV, people doing that, and I remember the whole insurgency period, the coverage that was happening कि यहाँ से आ रहे हैं, militants को train कर रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, वो सब मैंने देखा हुआ है. So it's not, and I have also met people and talked to people because I'm a curious person. I know it's not like this is new to me. जो ये दिखाया था, it's not like ये फिल्म देख लिया तो मैंने जान लिया. लेकिन बहुतों के लिए ये हो सकता है ऐसा. See, I grew up in Karnataka. Okay, I don't have the same pain of partition. Yeah. वो सिर्फ पॉपुलर कल्चर में गाने सुने हैं मैंने. वो भी पंजाबियों ने बहुत गाया है. बंगाल में पार्टीशन के बाद में ज़्यादा पता नहीं है बात नहीं करता. हाँ. क्योंकि इतनी सारी फिल्में नहीं बनी हैं या ऐसे कुछ, तो पॉप कल्चर नहीं है. लेकिन पंजाबी उन्हें सब जगह है ना, एवरीथिंग, लिटरेचर, सॉन्ग्स, पोएट्री,
in their films and in their natak, in their everything, their day-to-day life, they have inherited that pain. So I know about that pain that they felt through their stories. So I had heard of stuff that happened in Kashmir on all the sides. It's a really complicated situation. Definitely the movie created a lot of awareness, but I won't credit only the movie is the key. इसकी वजह से सब हुआ था. There was generally an atmosphere. There was also a political atmosphere because after the abrogation, am I pronouncing it correct? Of 370, the political atmosphere was all in the direction of Kashmir. They wanted to bring some change, some positive change in the status quo, right? So वो direction भी उधर की तरफ था. So वैसा रहा तो then that's why it garnered so much attention also because the whole political environment was also going towards that. इस पर से ना मुझे एक बात पूछनी थी एक्चुअली, मतलब दिस इज समथिंग जो मेरे अंदर एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है एंड अभी से नहीं, दिस इज सिंस लाइक पास्ट 5-6 years नाउ. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है बिकॉज आर्ट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव एंड हर तरह के जिनके भी जो भी ओपिनियंस है वो अपने अकॉर्डिंगली उस आर्ट को पोर्ट्रे करेंगे. डज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री और ऑफ द सोसाइटी हेल्प इन क्रिएटिंग वन सॉर्ट ऑफ आर्ट? Not necessary. क्योंकि I don't think so Kashmir Files would have been possible in a different generation or in a different political condition. That would make it seem like he was being an opportunist then. Then he made that film because the political atmosphere was But then option भी क्या था? So then it's then as some people would suggest that it is propaganda. I don't know. I'm not calling it anything. Yeah. It's a film that Vivek Agrawati made, which a lot of people watched. It made a lot of money. That is also not important to the discussion that we are having. So then, are you suggesting that it was probably at the right film at the right time? Maybe, yeah. So then it's probably true that what people are saying that. But I am not going to suggest that. It's a film that probably he wanted to make for a long time. Some of his other earlier films also have been political in nature. He's generally critical of the leftist sort of a thing. He's critical, and that's his what do you say? That's his what's the word I'm looking for? That's his way of, because he doesn't believe in the things that the left believes. So that's his way of expressing his dissent and to that. So he has every right to tell stories or have an opinion or challenge certain ideas. He has every right to do that. So I suppose this film was also something part of that, and I wouldn't categorize it as a certain opportunism. Yeah. But it is possible that some people will take a particular environment and say, this is a trend, let's follow this trend. A lot of films have happened like that. Yeah. वो तो ट्रेलर देख के समझ में आता है कि हाँ ऐसा हुआ है. In fact, Vivek himself told me this thing कि मतलब after Kashmir Files came a lot of like files वाली films काफी आ गई. तो वो ट्रेंड फॉलो करने वाले. So that is just like हाँ, this is the way. I don't know how sincere or insincere they are in terms of how are they just following a trend or they just really want to say this story but they could never say. I don't know. I feel that this kind of a film could have been made at any other point of time also. It just so happened that the political climate was such that it garnered a lot of attention towards it, which didn't happen with his next film. Yeah. It didn't have a lot of political attention. Yeah. So it felt okay, I suppose. But coming back to आपके जो फिल्म्स रही है, आपके जो कैरेक्टर्स आपने पोर्ट्रे किए हैं, वॉट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर यू कि मतलब एक डार्क कैरेक्टर प्ले करना या एक रेगुलर लाइफ इंसान को प्ले करना? बिकॉज जब मैं शैतान में जो आपका रोल है उसे देखता हूँ एंड एट द सेम टाइम जो मैं मंदार का कैरेक्टर देखता हूँ ना, मंदार इट फील्स लाइक ये रेगुलर बंदा है जिसको मैं हर दिन शायद देखता रहूँगा. ऑफकोर्स मैं उसके थॉट्स नहीं समझ सकता, बट क्योंकि वो फिल्म में पोर्ट्रे करता हूँ उन थॉट्स को, वो ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए? नो यार, आई थिंक आई गो बैक टू दिस सेइंग दिस ओनली, जो मैं पहले बोल चुका हूँ. Everything is difficult if you don't understand it and if you're unprepared. Understanding is also part of preparation. So वो preparation जहाँ पे कम हो जाती है तो वहाँ पे दिक्कतें होती है. मंदार के लिए आप प्रिपेयर कैसे करते हो? There was a lot of time. I spent a lot of time talking to Harshvardhan. We spent a lot of time discussing things, and I think वो बहुत early on I kind of latched on to his sensibility. After reading the script ना, I told him like ये 70 के दशक में बनती तो अमोल पालेकर, it's a very Amol Palekar film. And that's how, and that was the appeal of Amol Palekar ji.
ही वॉज योर एवरेज रामू, राइट, है ना, द एवरेज मेल मिडिल क्लास इंडियन, करेक्ट, या, वो था वो. So that's why that was his charm. He was representative of that. Mr. Bachchan was representative of the angst that the average Indian male had. राइट, But Amol Palekar was a representative of the working class. कि वो ऑफिस जाता है, बैंक में काम करते हैं, कुछ है कहीं दुकान में, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जो ट्रेन लेके बस लेके स्कूटर चलाते हैं या नई नई गाड़ी फिएट की खरीदी है उन्होंने. He was representative. That was his charm. So I think that was the sensibility. So I latched on to that. So that really helped me pitch the performance in the right place. तो वहाँ पे कोई सेंसिबिलिटी की गड़बड़ नहीं होती. अगर मैं वहाँ पे समझता नहीं कि ये बना क्या रहा है, so then I don't know how to pitch my performance, how to serve with sensibility. We had time and to discuss, hang out, talk about things in detail. And then so when I was on set, I was kind of well prepared to sort of take on that role. मुझे मुश्किल बिल्कुल कहीं पे भी कुछ भी मुश्किल नहीं लगा. But when you compare intimate scenes, he was shooting it on film, on raw stock, on 16mm. So we had to do a lot of rehearsals, and then he used to make us rehearse the intimate scenes also, which was a bit too much because he didn't want to waste. पैसे नहीं थे, तो he was like, footage ये 16mm का film waste हो जाएगा. So he'll make us like 4-5 rehearsals कि exactly करोगे क्या, अच्छा यहाँ पे kissing होगी, यहाँ पे होगी. So regular scenes it's okay, but when it comes to intimate scenes, it gets a bit like uncomfortable. Yeah. But fortunately, I think everybody was focusing on being a professional actor. So जैसे तैसे करके हो गया. But we also used to figure out ways to sort of protect each other, make them feel comfortable. Ki nobody should feel that they've been exploited or harassed or anything like that. Yeah. So, like, even the actresses used to go out of their way to make me feel comfortable, and I also used to go out of the way. And Harshvardhan and everybody on set, it's like, this is a piece of work that we're doing. We have to do this, and it is based in reality. It has to seem real. So we'll pull in all our resources and all our knowledge and trust each other, and then recreate that environment. But I want to see rehearsals because I don't have film to waste. बट यू नो आपने एक पॉडकास्ट किया था विद साइरस ब्रोचा, उसमें यू बड़ा हैव पसंद है ना वो. बट उसमें आपकी एक लाइन है, इनफैक्ट मतलब आप, आई डोंट नो कि वो क्या कोट था एग्जैक्टली, बट यू सेड दिस थिंग कि आई एम द बेस्ट ड्राई हम्पर इन द सोसाइटी. आई एम द बेस्ट ड्राइवर. या मजाक में कहता हूँ यार, मैंने फिगर आउट कर लिया, सिमुलेशन एक्सपर्ट हूँ मैं. वो विवेक जी के लिए किया था मैंने. एक्चुअली वो हम ज्यादातर उधर ही फिगर आउट करना पड़ा था. That was the first time I was doing something. Hate story, yeah. That was the first time I had to do something like that, and it was very technical because there was a certain aesthetic, and then there are all the boundaries. So, and then Pauli was very professional about it. So, she really put me at ease. So we used to discuss, can I touch you here? Can I hold you that? And she was a really good sport, so that also kind me. But I also devised ways to sort of be comfortable in such situations. कि ऐसा नहीं कि because मैं मर्द हूँ मैं comfortable हूँ, because I am the dry emper best in the business मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं comfortable हूँ. ऐसे आसानी से हो जाएगा. You have to prepare for it. You have to spend time with the other person. There are you have to discuss boundaries. I also have my boundaries. It's not like only the women. I also have boundaries. So once all of these things are that creates that conducive environment and the necessary trust between everybody who's present over there. That I figured out working with him. Okay. On that set. One last thing I'll ask you, and then we can end this podcast. I can talk more. Oh, we have to go? Yeah. So somebody else also is waiting for us. Okay. Sorry. So I'll just मैं वापस आएगा ना बोला. हाँ हम करेंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट करना है आपके साथ. बट देन एक चीज़ जो बहुत वियर्डली मुझे मिल गई थी, पता नहीं कहाँ से, शायद फेसबुक पे मैंने कोई पोस्ट देखा था. कार्तिक आर्यन से क्या प्यार है आपको, क्या इश्क है? आशिकी 3 करनी है उनके साथ. नहीं कर सकते हैं, इट्स अ गुड आइडिया. आई थिंक इट विल बी ग्रेट. मेरी और कार्तिक की जोड़ी बहुत सुपर हिट जोड़ी रहेगी. नहीं, मैं तो मजाक में बोलता हूँ कार्तिक आर्यन, एंड पीपल, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज कार्तिक आर्यन, पीपल लाइक व्हाई, वो चल रहा है ना बहुत, इसीलिए तो मैं भी चलना चाहता हूँ. But jokes apart, I noticed something about him that we got started around the same year. 2011 was his debut year with Pyar Ka Panchnama, and Shaitan came हमारा. तो both were Viacom 18 की films थी. And then after Pyar Ka Panchnama, his career kind of like staggered a little bit. I think Akashvani or something he had. Yeah. He used to go by a different name then. तो whenever we used to meet ना, यहाँ मुलाकात हो जाती थी किसी फंक्शन में, किसी अवार्ड सेरेमनी में, and all those things. He had total conviction as to what he is and what he wants to be.
Nobody else had figured it out yet, but he knew. And of course, he was suffering a little bit also because like, you know, he was sure that I know Yeah. what I am, but he wasn't getting that recognition that people, yeah, we know you are, तू hero है, तू hero है. Correct. वो नहीं मिल रहा था लोगों से. And because subsequently his films, few of his films were not doing very well also, so it was a थोड़ा बहुत वो stagnant period था. But कहीं पे भी उसने अपना conviction नहीं खोया. Whatever it is now, one people may be critical of कि यार हीरो बनने आया था, whatever. That doesn't matter. That's immaterial. I think he had a vision for himself and he had conviction for that vision and he believed in it कि मैं हूँ hero. Okay. And वो बना hero. I think it's a story of inspiration. Yeah, yeah. And I definitely, this is take inspiration from that aspect that he was not confused about who he is. A lot of people who come to this business get really confused about who they are. Now I am not saying that ki pursue stardom or something. You have to find your journey, you will define. But you have to have conviction. True. For which you have to learn, you have to change, you have to adapt, you have to adjust. And you have to sometimes reconfigure your ambitions. And have conviction in that. You have to have conviction. तो जो उसमें था. So that's one reason why also I keep bringing up his name. Yeah. Apart from the Aashiqui 3. apart from In Jest. Yeah. Okay. Gulshan bhai, thank you so much इस podcast के लिए. Any last message to people for Bad Cop? And I hope so Bad Cop के पहले Aashiqui 3 भी जल्दी हो जाए. With you and Kartik Aaryan. Yeah, Kartik will be great in Aashiqui 3. So भाई देख लेना. बात कर लेना. तुम्हारी तो मतलब वो प्रोड्यूसर्स के साथ पहुंच है ना, तो बोल देना. कार्तिक आर्यन भाई, अगर आप देख रहे हो जोड़ी podcast, रहेगी गुरु. बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी हमारी. तो let's do a film together, bro. Perfect. Thank you so much, Gulshan bhai. It was fun talking to you. Thank you. Perfect. Cut.